Good morning, everybody. I am Gorgeous Singh from Class 4. It's an absolute honor to me to stand here today, and I welcome all of you in the celebration of Independence Day. India attained independence of this day, the year of 1947, after the several of year struggle. Being independent means freedom to speech and freedom to fundamental rights to each and every citizen of our country. Now I request Mehul to take the charge of the anchoring. Over to you, Mehul. Thank you. Let's celebrate freedom. The heartbeats have gone up and everyone is eager to sink into the depths of a patriotic poem recited by Gauri Sharma titled हम बच्चे बलवान बनेंगे. बच्चे बलवान बनेंगे, मेहनत कर इंसान बनेंगे. इस धरती पर जन्म दिया है भारत माँ की शान बनेंगे. हाथों में फुलादी ताकत लेकर हम चट्टान बनेंगे. पर्वत जैसे ऊंचे उठकर भी ना कभी अभिमान करेंगे. सदा सुगंध फैलाने वाली फूलों की मुस्कान बनेंगे. नैया पर चलने वाले हम आंधी तूफान बनेंगे. हम बच्चे बलवान बनेंगे, मेहनत कर इंसान बनेंगे. जय हिंद. थैंक यू. Hello everyone, my name is Miss Nuvya Singh Solanki from UKG class. Today I am going to tell you a few lines. Independence Day. Independence Day is the national festival of India. It is celebrated on 15 August every year. We are celebrating 75th Independence Day in this year. On this day we got independence from Britishers. Many freedom fighters did their best to make our country free. For example, Lal Bahadur Shastri, Rabindranath Tagore, Bhagat Singh, etc. etc. India became an independent country on 15 August 1947. National flag is hoisted and get salute everyone. Prime Minister of India hosted the national flag at Red Fort in New Delhi. Indian national anthem Jan Gan Man is also sung on this day. It is very proud moment of our country. Happy Independence Day, all of you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much. India celebrates 15th of August as its Independence Day. It is the day when the India got freedom from its British government. Independence Day holds a special place in all Indians' heart. We celebrate this day by organizing different events. Independence Day is the day when we pay respect for the freedom fighters who gave their lives for the country's independence. It is the day we remember their immense contribution to the freedom struggle of India. My name is Sweet. Today my topic is National Flower of India. The lotus is our national flower of India. It has very significant position in our Indian mythology. It is flower of Codex Lakshmi. Bye everyone. Have a nice day. Hello, my name is Devasya Sharma from UKG class. National fruit of India, mango. Mango
India. Mangoes are native to India and including India. Since time immemorial, mango has cultivated in India in ancient times as delicious snatch of mangoes has been defined by many renowned poets. The great Mughal emperor had planted about 1 lakh mango trees in Lucky Park. Thank you. My name is Ojas Mishra, student of class LKG. I'm going to tell you the significance of Tiringa. The Indian national flag symbolizes national pride and is one of the more respected national symbols. The national flag is popularly known as Tiringa, which means three colors or tricolor. Thank you. Hello, my name is Anhat. India celebrates 15th August as its Independence Day. Every year, that day, our country got freedom from British oppressors. Happy Independence Day! Jai Hind! This I'm going to tell you about white color Indian flag. White color shows peace, unity, positivity. My name is Aja Mishra, student of class MKG. Today I am going to tell you the importance of Ashok Chakra in our flag. There are 24 scores in the Ashok Chakra, which stand 24 qualities of a person. Giant. My name is Anika Barman. I'm going to I am going to tell you the importance of green color in our national flag. Last band is green color. That's all. Fertility. It's broad. Great. Thank you. मारे यहाँ कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। ज्ञानबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छोड़ के दिल के तार से इंडिया वाले, जीत ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले।
झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बात बात में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपूताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बच्ची तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पत्नियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाणा है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Hello everyone, my name is Ishijit from class UKG. Today taught the ABCD of India. You must remember that he is Indian and he has every right in this country, but with certain duties. Jai Hind. Thank you. Good morning everyone. My name is Vatsal Ashra from class 4th A and the thought of the day is my
heritage. Eyeshadow was tried to be worthy of it. I said to my parents, teachers, and all elders that respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I place my devotion. For their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Thank you. Thank you all. I'm Gorgeous Singh from Class 4. News for the day. International news. India plays contributed role. Afghanistan says bidding in. National news. PM Modi virtually launched Ujjwala 2.0 and UP Mohaba at 12:30 p.m. on Monday. Sports news. Tokyo 2020. India passed Neeraj Chopra Golden Globe record best ever Olympics. Signed. Happy Independence Day to all. I am Aishwarya Raj Singh from Class 4. I am going to speak on the topic National Bird of India. Peacock is the national bird of India. Commonly known as peafowl, it represents beauty and grace. It was declared the National Bird of India in 1963 because it is the main part of Indian culture and custom. People are also familiar with this bird. Moreover, no other country recognized peacock as its national bird. Hence, it became the national bird of India. They are the national bird of India, but in modern era, the number of peacocks are decreasing day by day. So we should all take a step to save them. Thank you. Have a nice day. Morning, dear members. I heartily welcome all the dignitaries, the students, the parents for the celebration of Independence Day. This day is very special because we have come together to believe in the glory of our nation as Indians. I request respected sir to kindly host the flag. I request everybody to take the position for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you everyone. Thank you.